अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूनिट नंबर 4 है हाउ कैन वी इफेक्टिवली मैनेज रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिविटीज़। इसका जो फोकस है इन यूनिट 2.4 यू विल थिंक अबाउट हाउ वी कैन मैनेज रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिविटीज़ effectively in the classroom. There are three focus areas in this unit. Different ways student can report or apply information they get by reading, different roles of the teachers to manage different stages of reading or critical thinking activity, different stages for getting learner to develop critical thinking skills through reading. इसके learning outcomes में है by the end of this unit you will be able to manage various stages pre, while and post of reading and critical thinking activities. Manage the pace and timing of reading and critical thinking activities. Pace means the average reading speed. Encourage learners to read deeper understanding by asking them to respond what they read. Encourage students to see their role in the classroom as critical thinkers rather than passive reader. Key principles के हैं reading and critical thinking activities can be effectively managed in the classroom if the teacher goes thoroughly through all these three stages of reading, pre, while and post. The pace and timing of reading and critical thinking activities are carefully managed by the teacher. The teacher makes reading more engaging, communicative for the learners. The teacher motivates learners to be critical thinker rather than being passive reader. तो इसको पढ़ लेने के बाद जैसे कि मैंने बताया था कि जो हाइपर लिंक में जो ब्लू कलर के होते हैं इनको हमने ठीक ज़रूर करना है, सो हमने कर लिया। नेक्स्ट है एक्टिविटी जो कि रिफ्लेक्शन है करंट नॉलेज एंड बिलीव्स का, जो आपको मैंने बताया था कि हमने ऑल टिक्स कर देने थे। उसके बाद यूनिट 4 स्टार्ट्स जो असेसमेंट है उसमें जो है वो लोएस्ट टू हाईएस्ट आपको पता है ऑलरेडी, तो वो मैं पहले को 4 सेलेक्ट करता हूँ और बाकी सबको मैं 5 कर देता हूँ, हाईएस्ट रैंक में ले जाता हूँ उसको। आप चाहें तो इसमें 2 to 4 और 5 जो भी आप मुनासिब समझे आप कर सकते हैं। इसको सबमिट करते हैं। कंटिन्यू करते हैं जी नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट व्यूअर्स हमारे पास आ जाती है एक्टिविटी क्विज़ है जिसे हम अभी करते हैं। व्हाई डू वी रीड? To find instructions amount of timing to prepare a specific dish recipe. To find out details of an event, newspaper. To find out how to travel a particular place, train timetable. To decide whether to watch the film or not, film review. Or to exchange opinions with friends, social media. व्यूअर्स नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरफेस आता है उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी अटैम्प्ट ये करेंगे हम क्विज़। कहता है इन यूनिट 3 वी लुक्ड एट सम डिफरेंट एक्टिविटीज़ विच कम बिफोर रीडिंग अ टेक्स्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप द पर्पस टू मैच देम to the appropriate pre-reading activities. इसमें कहता है pre-teach vocabulary ideas concepts from the text, तो इसका हो जाएगा आंसर arouse curiosity in learners about what they are going to read. Next है a discussion
और क्विज ऑन द सेम टॉपिक एज द रीडिंग टेक्स्ट। तो इसका जो सही ड्रैग एंड ड्रॉप है वो है आंसर एक्टिवेट लर्नर्स एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑन द टॉपिक। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बाय लुकिंग एट द टाइटल और पिक्चर ऑन द सेम पेज। इसका हो जाएगा मेक इट पॉसिबल फॉर लर्नर्स टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। नेक्स्ट है जी learners look at the layout of the text, discuss why someone would read this text in everyday life। तो इसका हो जाएगा create a link between the classroom task and the application of English to the outside world। नेक्स्ट हमारे सामने एक फिर क्विज आता है। Pre-teach vocabulary and ideas from the text. Use the board. A discussion or quiz on the same topic. A discussion or quiz on the same topic as the reading text. Walk around and show the page. Next है predict the content of the text by looking at the title or picture on the same page। तो ये लास्ट वन जो है learners cover the text। नेक्स्ट हमें फिर एक क्विज़ जो है वो हल करने के लिए मिलता है। रीडिंग स्ट्रेटजीज एनेबल लर्नर्स टू रीड मोर इफेक्टिवली। द टाइप ऑफ रीडिंग टास्क टू मैच द अप्रोप्रिएट रीडिंग स्ट्रेटजी। डू नॉट स्टॉप टू लुक अप वर्ड्स फॉर यू डू नॉट नो, अंडरलाइन देम एंड कीप रीडिंग। इसका जो सही जवाब है वो है रीडिंग फॉर गेस्ट। Question number 2. Numbers look different from letters of the alphabet in English. Look through the text and locate the numbers as times and quantities will often be expressed as numbers। तो इसका सही आंसर हो जाएगा scanning for information about amounts। Question number 3. A named person or place will start with a capital letter. These letters are taller than lowercase letters and easier to spot. Locate the appropriate capital letters in the text to find specific information। इसका सही जवाब हो जाएगा scanning for information about people or places। Question number 4 है a written review will usually end with a conclusion। Try reading the last paragraph to see if you can find the information you need। इसका जो आंसर है बेस्ट आंसर वो है फाइंडिंग द ऑथर्स ओपिनियन। All the answers are correct। नेक्स्ट हमारे सामने है टेक ऑल दैट अप्लाई। तो इसमें जो बेस्ट पॉसिबल आप समझते हैं वो उनको आप टिक्स कर देते हैं। तो आप
हम सब इसको ऑल टिक कर देंगे। Tick all the statements you agree with. इनको भी हम ऑल टिक कर देते हैं। Next activity. Tick the statement you agree with. If you want to help your students read, get them to predict the content by showing some of the keywords and phrases before they see the text. The encourage communicative reading gives student A the first half of the text to read and student B the second half. Then get them to close their books and tell each other what they have read. Make reading aloud in class more interesting by giving those who are listening to questions to answer about the text. ये सभी हम टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट हमें फिर एक क्विज़ मिल जाता है, अटेम्प्ट द क्विज़ नाउ। Select the following critical thinking techniques from drop down list to match the examples from a lesson. Teacher, how do you feel about bugs? Tell your partner. Correct answer is sharing ideas. Learner, tug means move. Correct answer is new words from the context. Teacher, is the bug in the poem happy? How do you know? Answer is inquiry. Teacher, the cricket is glad to be a bug. Are you glad to be a child? Why? So correct answer is making connections. Answers are correct. Next is Unit 4 and Self-Assessment Checklist. We will tick all high grades. Next is Unit 4 quiz. Question 1. In the real world, people usually read a film to review. The correct answer is decide whether they want to see the film. Next. Encouragement is one of the basic techniques to help learners become more communicative in their reading lessons. The answer is false. Question number 3. Communication is the sharing of ideas and experiences between readers and listeners. False. Question number 4. To complete a reading task, learners need about 2.5 times as long as the teacher. Now we will submit our quiz.
ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। उसके बाद व्यूअर्स हमें रिफ्लेक्शन का एक पेज मिलता है, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। डियर व्यूअर्स, आंसर द क्वेश्चन। रिफ्लेक्शंस में जो है टिक ऑल द अप्लाई, यानी टिक ऑल दैट अप्लाई। In a reading lesson, learners should also practice other skills. Yes. A teacher can support learners through an activity to make it more achievable. Yes. Learners do not have to complete an activity in the same way. Yes. The different stages of a lesson should work together to build towards the learning objectives. Yes. Submit करें। Your answers are acceptable. Right. Next activity. व्यूवर्स, यहाँ तक ये यूनिट था। उसके बाद यूनिट नंबर 5 जो है वो शुरू हो जाता है, और उसके लिए इंशाल्लाह मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। अब अगर आपको ये एक्टिविटी आज की और जो आज के मॉड्यूल्स हमने किए हैं पसंद आए हैं, और आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन में ऑल को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें।